Jai Jagannath, welcome to our first class of midwifery. The true pelvis consists of which of the following three parts? Option A, brim, cavity and outlet. Option B, ilium, ischium and pubis. Option C, false brim, true brim and base. Option D, sacrum, coccyx and innominated bone. पेल्भिसटा दी टाइप्र थाए गोटे ट्रू पेल्भिस आ गोटे हूँ फल्स पेल्भिस ट्रू पेल्भिसटा सब मेजर कराए लोअर ब्रिम रु आ फल्स पेल्भिसटा सब मेजर कराए अपर ब्रिम रु ट्रू पेल्भिस भितर को भी मेजर करने तीन प्रकार मेजरमेंट तीन प्रकार साइन थाए ओब्लिक्यू ट्रांसवर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अनुसार आम मेजर करूँ तो यार करेक्ट आंसर होची ब्रिम कैविटी एंड outlet. The true pelvis form the actual bony bath canal through which the baby must pass during labor. It is automatically divided into three operational parts: the inlet, the interminated cavity, and the lower outlet. Question number 2. The major biological function of HCG. Human chorionic gonadotrophic hormone no biological function कौन? Option A, maintain of corpus luteum till 6 weeks of pregnancy. Stimulate maternal thyroid gland, increasing in size of the breast, or hypertrophy of vagina. तो HCG हॉर्मोनटा से हॉर्मोन जोटार आम जापर कि फीमेल प्रेग्नेंट अच्छा कि ना तार ब्लड यूरिन रे तार परसेंटेज अनुसार आम जापर कि फीमेल प्रेग्नेंट अच्छा कि ना जोटा कि हेल्प करे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करने कॉर्पस लुटियम को maintain the corpus luteum till 6 weeks of pregnancy. Early pregnancy human chorionic gonadotrophic hormone keep the corpus luteum alive, so it can be continue secreting progesterone to hold and secure the pregnancy until the placenta take over. Question number 2. What is the ideal landmark of the fetal skull used to define the presentation during the normal labor? प्रेजेंटेशन होची बेबीर जो पार्टा लोअर पोल ऑफ यूटरस रे प्रेजेंट थाए ताहाको प्रेजेंटेशन कहा जाए तो सबुठु कॉमन बा नॉर्मल लेबर रे क्यों प्रेजेंटेशन थाए मेंटम सिंसिपुट भर्टेक्स और ऑक्सीपुट ऑप्शन सी होची भर्टेक्स करेक्ट आंसर The vertex is the area on the fetal skull bounded by the anterior fontanelle and posterior fontanelle and the sagittal suture lines. It is in about 95% of normal deliveries. The baby present head first via this specific vertex area, making it ideal landmark to define the normal presentation. Question number 4. The value of HCG in the blood reach at maximum between HCG रो लेवल टा ब्लड रे सबुठु मैक्सिमम क्यों टाइम रे थाए 10 to 13 day of pregnancy, 60 to 70 day of pregnancy, 4 to 6 month of pregnancy, 4 to 5 days of pregnancy. क्यों टाइम रे HCG हार्मोन टा ब्लड रे मैक्सिमम थाए 60 to 70 days of pregnancy रे मैक्सिमम थाए कारण यही समय रे हमर प्लासेंटा डेभलप होना थाए कॉर्पस लुक्टियम सिक्रेशन करिथाए प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लुक्टियम को हेल्प करे एचसीजी सेति पई एई टाइम रे मैक्सिमम एचसीजी थाए ब्लड रे दी 60 to 70 day pick this exact reason why the pregnant mother express absolute peak in morning sickness during this specific week due to high hormonal speckles. What is the normal length of umbilical cord in a full term baby? 55 cm. AVA rule. दुईटा आर्टरी थाए और गोटे भेन थाए The single umbilical vein
carry what type of blood and where does it deliver? Single umbilical vein, गोटे ही भेन थाए तो से भेनटा कौन क्यारी करे ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे बा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यारी करे ऑप्शन ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू प्लासेंटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मिक्स्ड ब्लड टू amniotic sac deoxygenated blood to maternal liver oxygenated blood to fetal heart. The single umbilical vein carry 100% of oxygenated nutrient-rich blood from the placenta directly towards the fetal heart. This is the opposite to standard adult systemic anatomy where the vein carry deoxygenated blood. Question number 7. Which diagnostic method is commonly used to detect malaria infection in pregnant women? Urine analysis test, rapid diagnostic test, chest x-ray বা इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्यों टेस्ट रु जना पड़े कि प्रेग्नेंट वुमेन मलेरिया क्यों थे डिटेक्ट करा जाए फास्ट हूँ कि बहुत सारा एक्सरे कि भी प्रकार यूवी रे कौन भी रेडियोलोजिकाली रे गुड़ाक प्रेग्नेंट समय फिमेल मानक अप्लाई कले से बेबी और मदर दिजन जाक हार्मफुल थाए तो रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट जोटा कि बहुत इफेक्टिव थाए कॉमनली यूज इन प्रेग्नेंट reliable and require minimal training, making them ideal for use in remote and resource limited setting. They are defect specific malaria antigen in blood such as Plasmodium falciparum and histidine rich protein. Sulfodoxime and pyrathymine is often used to interminated preventing the treatment. What is recommended frequency for breast self examination? केते गैप रे हमें ब्रेस्ट को एग्जामिन करवा किछि लम्प्स पई किमा किछि ब्रेस्ट ट्यूमर ए सब जिंस आम निजे सेल्फ एग्जामिनेशन केते गैप रे करवा मंथली गैप अनुसार करवा कारण हमर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली वंस हुए जोटा कि फीमेल रो बॉडी रो बहुत सारा हार्मोनल इनबैलेंस बा हार्मोनल चेंजेस शो करे से टाइम रे आम भलरे जापर कि किसी लब्स बा किसी भी ट्यूमर के किसी भी हाथ को किसी भी डिस्कम्फर्ट फील हो पारे breast self examination are recommended monthly ideally a few days after the menstrual period end to detect any unusual lumps or charges when the breast tissue is last tender and swollen. At what age should a woman being annually breast and pelvic examination? क्यों एज रू स्टार्ट करवा आमे ब्रेस्ट आउ पेल्विस रो एग्जामिन करवा 18 year old 21 year old 25 year old 30 year old 21 year old और जब सेक्सुअली एक्टिव था इयरली भी करें कारण फीमेल बॉडी बहुत सारा चेंजेस थाए तो 21 year old आम प्रति वर्ष चेक कले आम जापर कि किसी जदि सर्वाइकल कैंसर हो कि ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर यही सब जिनस किसी भी स्क्रीनिंग करिकी आम जापर इयरली डिटेक्ट करवा प्रिवेंशन बेटर देन क्योर. Women are recommended to bring annually breast and pelvic examination at 21 years of age earlier if they are sexually active. This ensures easily detection and potential health issues including cervical abnormalities and breast lumps. In the following, which is not a pregnancy sign? Chadwick sign, Brodzinski sign, Hager signs and Gödel sign. तो आंसर हो ऑप्शन बी. देखा कि बाकी अदर साइन गुड़ाक कौन चाडविक साइन हूँ पर्पल कि रेडिश डिस्कलरेशन जो हुए ताको चाडविक साइन कहुए जोटा कि ब्लड फ्लो अधिक हेले कि जो ब्लड भेसल्स गुड़ाक स्वेलिंग हेले बेसी एक्टिव हेले से एरिया चाडविक साइन देखा जाए. हेगर साइन हूँ
ହେଗର୍ସ ସାଇନ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସ୍ ଅଫ୍ ଲୋୟର ୟୁଟେରାଇନ୍। ଲୋୟର ୟୁଟେରାଇନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୁଏ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ସାଇନ୍ଟା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି 6 to 12 ୱିକ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ଗଡେଲ୍ ସାଇନ୍ ହେଉଛି ସଫ୍ଟନିଂ ଅଫ୍ ସର୍ଭିକ୍ସ ଟିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଭିକ୍ସଟା ନର୍ମାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଅନପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିକ୍ସଟା ନୋଜ୍ ଟିପ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଲିଫ୍ର ଟିପ୍ ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭାସ୍କୁଲାର ବା ବ୍ଲଡ଼ ଫ୍ଲୋ ଅଧିକ ହେଲେ ଏଇ ସାଇନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। Sign is to check the meningitis. Indicate by involuntary flexion of the hip and the knee when the neck is passively flexed due to meningeal irritation. The other three, Chadwick and Heger's girdle, are the standard clinical sign of pregnancy.